डिग्री ऑफ फ्रीडम सुना हुआ है पहले? डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं सर, पहली बार ही सुन रहा So these are the number of independent modes या ways in which an atom can possess energy. Yeah, you can say that these are the possible independent motions that system can have. Or we can say that these are the total number of independent modes, मतलब ways in which an atom can possess energy. So the independent motions or the modes which are being referred to are the independent modes being referred to are the motions. These can be translational, which is linear. It can be rotational, or it can be vibrational. So in how many ways there can be an atom which shows three translations, one rotation, one vibration, right? So total 5. तो जैसे अब हर गैस का अपना अपना, so based on the modes, we say that there are degree of freedoms associated with that atom. So for example, now we will say that there are 3 degrees of freedom. Okay, so one is, since we know the modes, okay, these modes, independent modes, are nothing but degrees of freedom. So there, an atom can have a translational degree of freedom. It can have a rotational degree of freedom, and it can also have a vibrational degree of freedom. So let's talk about monoatomic uh, gases. Monoatomic gases. These gases only have 3 independent motions, which are all translational. All translational. So 3 degrees of freedom. Then you have diatomic gases. Diatomic gases. So these are made up of uh, one atom connected to another atom through a bond. And not only they exhibit 3 independent uh, translational motions, translational motions, but they also exhibit a rotational. They can also have 2 rotational motions. Okay, so for example, these are the atoms which are connected to each other, and this is an axis. So both can rotate around this axis. Okay, so they exhibit a rotational motion. The other is if these are the 2 atoms and this is your z axis, ये आपका z और ये x में पड़े हुए, so इधर भी ये रोटेट कर सकते हैं, मतलब ऐसे. So 2 rotational motions are possible and 3 translational motions. So total degrees of freedom are 5, 3 plus 2. Then you have
triatomic uh, gases. Now, these are not linear like diatomic. Triatomic gases are non-linear gases. Okay, so they can rotate about 3 coordinate axes, and therefore they have 6 degrees of freedom, 3 translational, and 3 rotational. ये translational है. Okay, so linear. And if they are non-linear, so they are arranged like a triangle. And this is your y-axis, this is your z-axis, this is your x-axis. So they can rotate like this. They can rotate like this. They can also rotate like this. 3 rotations are possible. And if you increase the temperature, so they are at room temperature. The degrees of freedom we have studied are at room temperature. If you further increase the temperature, right? So whatever we have studied so far is for room temperature. Any increase in temperature will mean that the diatomic gases and polyatomic gases at higher temperatures, okay, they may start vibrating also. So additional degrees of freedom can get added to them because they have started vibrations. Okay. So at higher temperatures, the diatomic and polyatomic gases can also show additional motion, a mode, independent mode, which is vibrational motion. And hence the degrees of freedom will increase further. Okay. So let's say, as an example, how does it translate into a question? So let's say you're given a molecule of hydrogen. Okay, a molecule of hydrogen is given to you. Molecule of hydrogen is given. Okay, and it is 1 cc of hydrogen gas is given to you at normal temperature pressure. The question is how many degrees of freedom will it have? So पहली बात तो ये है कि it's a diatomic gas. Okay, so H2 is a diatomic, and we're talking about the room temperature, which is normal. तो 5 degrees of freedom होंगी total. But that is for one molecule. If you calculate in 1 cc, how many molecules are there, right? So if you have 22,400 cc, you have a gadro number of molecules. Okay. So if you have 1 cc, you will have 6.023 into 10 raised to power 23 upon 22,400 molecules of the hydrogen. ये number of molecules in 1 cc आ गया. Each molecule has 5 degrees, and therefore the total number of degrees which are possessed by all the molecules. So the total degrees of freedom possessed in 1 cc will be the total molecules in 1 cc multiplied by 5, because each molecule has 5 degrees. So these many degrees in 1 cc. Okay. मतलब 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी होती तो, लेकिन 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल होती हैं, बट वो अलग अलग डायमेंशन में होती है, मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि मोनोएटॉमिक गैस 3, diatomic gas 5, triatomic gas 6, and if the temperature is high, the number can go up also. ठीक है. Next topic is the law of equipartition.
equipartition of energy. Now, in a gas chamber or a container where the molecules are colliding, the total energy is shared between the molecules. And finally, in the container, a thermal equilibrium is reached, which is everybody is at the same energy level. So, this law was also deduced by Maxwell and also later improved by Boltzmann. And the idea was to show how much energy a gas molecule has. So the what is the average energy of a gas molecule? ओके ट्रांसलेशनल वाला हमने हाफ के बीटी एक पढ़ लिया हमने which is the kinetic energy वाला जो था dependence on the temperature of energy बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला 3/2 RT वगैरह वगैरह राइट ओके so if there is a container and it has a gas, so these are the molecules in the gas, and the system is in thermal equilibrium. Thermal equilibrium. Each molecule has same amount of energy. Now the total energy of this system is said to be divided equally in each of the degrees of freedom. So we know that energy which we studied for translational motion was half kT. Okay, this was the energy associated with one molecule, right? So half kT is essentially is in associated with 1 degree of freedom. 1 degree of freedom. So if you have um, bare minimum, you can have a monoatomic gas. So the monoatomic gas exhibits 3/2 kT. ये हमने derive भी करा था 3/2 RT वगैरह वगैरह, right? So that is the average translational kinetic energy because translational में 3 degrees of freedom है. Every degree of freedom has half kT. So therefore, monoatomic gas, the total energy of a molecule because of 3 degrees is this much. So this is the average kinetic energy in all 3 degrees. Okay. If you have, for example, helium, okay, and H2, for example. Now, somebody says calculate the energy associated with these. So your general rule to find uh, the internal energy, which is nothing but we have already studied associated with the thermal temperature dependence होती है जो kinetic energy होती है. The internal energy or the energy of the gas, the general rule is F/2 multiplied by kT. So your question to the person is, please tell me the degrees of freedom and I will tell you the total energy of the atom of the gas you're referring to. If they tell you it's a diatomic gas, then you say, okay, you're referring to degrees of freedom as 5, and therefore the average energy of a molecule of hydrogen is going to be 5/2 kT. This is the general way you solve it. Okay, uh, so if the energy associated with one molecule of a gas having degree of freedom is F, then it is half into kT by 2. If it is, these are N molecules, then it is F into N into kT by 2. Okay, so if it is 1 mole, so which means N as a quantity is 1 mole. So N into K becomes R. So it is FRT by 2. And if there are N moles, so this is 1 mole. So the energy associated with
3 by F by 2 N into RT. But now we have introduced a concept of degrees of freedom. So you will first check how many degrees are there. हमने जो निकाला था half kT, that was assuming one in one motion, 1 degree of freedom. VRMS निकाल लिया था, ऐसे करा था हमने. बट ये अब टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमें वाइब्रेशन, रोटेशन, ट्रांसलेशन सब कुछ देखना पड़ता है. Okay, so let's say there is a question that says, calculate what is the average kinetic energy of translation. Word is translation, and the temperature is 27 degrees. Okay, the temperature is given, the gas is given, known, and you have to calculate the average kinetic energy of the translation. Okay, so you say, okay, translation पूछे तो 3 ही होती हैं वो, चाहे वो diatomic गैस है. Total is 5, but translation is only so 3 by 2 kT E, because they're asking the average kinetic energy of translation only. So 3 होती है, even though it is diatomic, 3 होती हैं वो. So 3 by 2 kT is your answer. K is the Boltzmann constant, 1.38 into 10 raised to power minus 23. T is 273 plus this is 300. Then the second question could be, what is the total kinetic energy of the gas molecule, O2 gas molecule? Then you say it's uh, diatomic, and therefore the total degrees of freedom it has is 5, and therefore it is 5 by 2 into 1.38 into 10 raised to power minus 23 into 300. Okay. Then it says, what is the total energy in 1 joule in joules in 1 mole of oxygen? So this is energy which you have calculated is joules per molecule. Now you're being asked to calculate joules per mole. So if you know this, multiply this with 6.023 and you will get the answer. Any doubt? So degrees of freedom is very important for you. कुछ बात समझ में नहीं आई? बस एक मेरे वो बोलेगा टोटल एनर्जी, ट्रांसलेशनल की एनर्जी, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर रोटेशन. तो बोलेगा अच्छा डायटोमिक है तो रोटेशन की तो 2 होती हैं, तो एफ की जगह 2 डाल देंगे, 2 by 2, तो रोटेशन वाली काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. ठीक है जी, आगे बढ़े. This was only for translational. This was a total, including rotation and vibration. बता दो जब आगे बढ़ सकते हैं तो. बता रहा हूँ. This is per molecule, and if I multiply this with 6.023 into 10 raised to power 23, it becomes joules per mole. ठीक है. समझ आ गया. Mood formula you need to remember is this. This is a crux. F One F molecule into ka with F into F KT by 2. degrees. This is a degrees of freedom, which is different for monoatomic, diatomic, and triatomic gas. ठीक है. And remember, each
each degree of freedom has kT by 2. Every degree of freedom has per molecule basis kT by 2 as the energy. इक्विपार्टीशन का मतलब ही यही था कि 5 डिग्री है तो kT by 2 सबके पास है, kT by 2 kT, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में सेम एनर्जी होती है। ठीक है। ठीक। ओके, सो लेट्स से देयर इज अ क्वेश्चन इन विच देयर इज अ गैस मिक्सचर, और ये क्वेश्चन जेई में बहुत बार आता है जिसमें मिक्सचर मिक्सचर होता है। सो द गैस मिक्सचर हैज 2 moles of oxygen, okay, which is obviously diatomic, and it has 4 moles of neon, right, at some temperature T, which is not known to us. Now, the question is so you have to neglect the vibrational motion. Okay. You have to calculate the total internal energy of the system. Okay. Calculate the total internal energy of the system. करो. Internal energy is nothing but this वही NCV dt वाला जो है, but in terms of degrees of freedom. Moles में दिया हुआ है. Hmm. So, you know, it's 2 moles. Oxygen is diatomic and neon is monatomic. मोनोएटॉमिक. मोल्स में निकालनी है बस. ठीक है. You know, half kBT is for 1 molecule, बट ये डायटोमिक है तो इसका 5/2 kBT होगा. इसको अब गाद्रो नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 मोल के लिए. सो दिस विल बिकम 5/2 RT, और इसको ही मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2 मोल के लिए हो जाता है. सो इसका आ गया 5 RT एनर्जी टोटल. और नियॉन की अगर बात करें तो 3/2 kBT उसके एक मॉलिक्यूल की होती है. हमें अब गाद्रो नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 3/2 RT. 3/2 RT. हाँ. और इनटू कितने हैं इसके? 4 मोल्स. फोर। ये तो पर मोल आ जाएगी ना इनटू एन करने से, ये अब गाद्रो हाँ, थ्री नंबर है. आर टी आ जाएगी। हाँ, नहीं तो 6 RT. 6 RT। तो टोटल एनर्जी विल बी 5 RT प्लस 6 RT इज इक्वल टू 11 11 RT। RT. दैट्स ऑल. And now question. There is a container. This is your container, and it is enclosing a diatomic gas in it. So it encloses a diatomic gas. The container is moving with velocity v. Question is, what is the kinetic energy of the gas with respect to the center of mass of the system? What is the kinetic? और इसके number of moles जो है n है. Okay, so diatomic gas, it is moving with n, and the temperature of the gas is n moles are there. T is the temperature of the gas. Question is, what is the kinetic energy of the gas with respect to the center of mass of the system? N moles are there. Mass of the gas is known to us, जो total mass है अंदर, that is capital M. क्योंकि हम तो काइनेटिक एनर्जी टोटल की निकाल लेते हैं ना, बट रिमेंबर जो काइनेटिक एनर्जी हम निकालते हैं इन फॉर्मूले से, इट इज विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द मास ओनली.
सो वट एवर यू विल कैलकुलेट फॉर अ डायटोमिक गैस, आपका आंसर आ जाएगा 5/2। डायटोमिक है, एनआरटी, यही आएगा ना आंसर। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू इट्स सेंटर ऑफ मास। ओके। पार्ट बी, it is moving with velocity v, so what is its kinetic energy with respect to ground? जो बच्चा ग्राउंड पे खड़ा हुआ है यहाँ पे, उसको क्या नजर आएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी? वो ये बोलेगा, एक तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी 5/2 एनआरटी है अपनी, प्लस इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ ऑफ हाफ एम बी स्क्वायर बी स्क्वायर, टोटल सो दिस एनर्जी इज आ अ, जाएगी। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा ये। हाँ, रिलेटिव। हाँ, तो ग्राउंड से कैसे नजर आ रही है? हाँ ठीक। सो लेट्स से देयर इज अ बलून and the total moles of helium which are available to you is 5 moles, and the temperature is 7 degrees centigrade. You have to calculate A, what is the number of atoms of helium in the balloon? अच्छा, 5 मोल्स हमें हीलियम के दे रखे, तो 5 इंटू हाँ, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो 5 into 6.023 to 10 raised to power 23, 5 6 are 3 into 10 raised to power 24, 30 हो जाएगा ना हम्म। एटम्स। सेकेंड पार्ट, हीलियम के जो ये हैं, व्हाट इज द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? टोटल इंटरनल एनर्जी पूछा है, मतलब भाई काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं बेसिकली। इट्स हीलियम, सो इट्स मोनोएटॉमिक, सो वन। इट विल बी 3 by 2 kb r kbt हाँ ठीक है, इंटू यू द कैन स्टार्ट अवोगाद्रोस कन्वर्टिंग। नंबर। हाँ, इनटू अवगाद्रो नंबर, तो 5 मोल थ्री दिए आर हुए हैं। टी विल बी 15/2 RT। हाँ, सो 3/2 RT इंटू 5 इज इक्वल टू 15/2 RT, आंसर। Nothing complicated. So just remember that each degree of freedom has same energy, right? Which is half kBT. So if you know degrees of freedom, the total energy is split in each degree of freedom by the formula half kBT. And number of degrees of freedom is F. इक्विपार्टीशन भी कर लिया हमने, और एक बार वी विल हैव टू गो बैक टू थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में, यू रिमेंबर, गामा जो था हमने CP/CV करा था, right? CP minus CV is equal to R. That was the मेयर्स फॉर्मूला। ये डेरिवेशन भी आती है CP माइनस, लेकिन उसके अंदर भी एक बार वी केम अक्रॉस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, लेकिन वो हमने ठीक से पढ़ा नहीं, क्योंकि उसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया था। तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से एक बार आया तो था यार वो एक बार। हाँ, यस,
So this is when we were studying the specific heats at constant volume, etc. तब आया था ये, ठीक है? तो एक बार just I'll just take you through that also. So how do you connect the thermodynamics? और कल वो हुआ जब 3/2 वो 5/2 वाला क्वेश्चन था, तो उसमें हम अटक गए थे, मैं तो अटक गया था खैर. So if let's talk about specific heat of a gas at constant volume. Now we generally write it as what? U is equal to NCV delta T, right? ये लिख देते हैं हम. If it's a isochoric process, iso constant volume process है तो NCV dt. Now let's say we want to express the specific heat of a gas at constant volume, okay, in terms of degrees of freedom. So now we are expressing specific heat in terms of degrees of freedom. Of freedom. Okay. So U, the energy can also be written as N into F/2 RT. The same formula, which is NCV dt, can also be written like this. क्योंकि internal energy जो है वो टेम्परेचर चेंज पे डिपेंडेंट होती है, तो देर आइडेंटिकल. जो ये हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, सिर्फ फर्क इतना है कि ये मतलब डेल्टा यू निकालना होता है हमको, और ये जो होता है ये इंटरनल एनर्जी एट टेम्परेचर टी. सो अगर आपको डेल्टा यू निकालना है, सो इट इज एन इंटू F/2 R delta T. Okay, so you can find the so you can see that specific heat at constant volume. If you compare this with this, N is same, delta T is same. So CV actually becomes F/2 into R. And this is the topic, specific heat of gases in terms of degree of freedom. So if you know the gas's degree of freedom, you can also find its specific heat with the help of this knowledge, that CV is equal to F/2 R. So if it's a monoatomic gas, its constant, its specific heat at constant volume will be 3/2 R from this. If it is a diatomic gases, so this is monoatomic gas. If it is if it's a diatomic gas, okay, then 5/2 R. If it is a polyatomic gas, which is uh, triatomic actually, non-linear gas, it has 6. So CV will be 6/2 into R. So this is essentially 3R. So now we have linked the specific heat of a gas to the degrees of freedom. So if you know there is a gas like O2 and you're struggling कि यार इसका specific heat क्या होता है, you don't need to struggle because you know it's diatomic. इसका CV जो है it is basically 5/2 R, और Cp minus Cv is equal to R. So Cp is going to be 7/5R, and then gamma therefore is going to be Cp by Cv is equal to 7/5 divided by 7/2 divided by 5/2 is equal to 7/5. So ये gamma find करना बहुत easy हो जाता है if you know the uh, degrees of freedom. Gamma, the adiabatic constant was Cp by Cv, but Cv you've calculated for O2 in terms of degrees of freedom. Cp by Cv is equal to R, Mayer's formula. तो Cp भी निकल गया 7/2R. गामा निकालने के लिए Cp by Cv करा तो 7/2R divided by 5/2R is equal to 7.5 is equal to 1.4. So you could find the adiabatic constant just because you knew the degrees of freedom actually for the gas. ठीक है. But so sometimes you do get these questions where uh, indirectly they expect you to know कि gas
N2 थी तो पता होना चाहिए था कि डायटोमिक है और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इतनी है और देयरफॉर सीवी इतनी है। सीवी मालूम है तो सीपी मालूम है, सीपी और सीवी मालूम है तो गामा भी मालूम है। तो उसका उस एडियाबैटिक प्रोसेस में गामा भी यूज कर सकते हो आप यूजिंग दिस। ये उस समय हम छोड़ दिया था हमने, मतलब वी डिड नॉट बॉदर टू रीड दिस, क्योंकि वो ठीक से पता नहीं था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। बस सीधा लिख दिया था सीपी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, बट हाउ सीवी इज लिंक्ड टू द डिग्री ऑफ फ्रीडम वाज मिसिंग। सो लेट्स से देयर इज अ, ये भी पता होना चाहिए, if there is a cylinder and this cylinder is connected to another cylinder, okay, and this cylinder, यहाँ पे स्टॉप कॉक लगा हुआ है, यहाँ गैस है, this is the gas and this is vacuum. So you open the stopcock and the gas enters this. So इस expansion में what is the work done by this gas? Because it is expanding, वर्क डन है no work जीरो। is done. No work is done because there is a vacuum here. एक्सपेंशन है, Free expansion है, आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन। free expansion, free expansion. There is no, it's a vacuum here, na? Surrounding तो है यस। ही नहीं ना, it's a vacuum. So if you expand against vacuum, no work is done. ओके। कई बार ये क्वेश्चन भी होता है, वो इवैक्यूएटेड लिखा होता है, इवैक्यूएटेड सिलेंडर। अब बच्चों को ये नहीं पता कि इवैक्यूएटेड सिलेंडर है तो भाई यहाँ वर्क डन जीरो लगाना है। कॉन्सेप्ट इज द, इन दिस एक्सपेंशन देयर इज नो वर्क डन। सो सटल पॉइंट। लेट मी जस्ट कंपेयर व्हाट वी आर लेफ्ट with the NCRT. टेकतान, क्या क्या लिखा होता है यार इसमें। कैलोरी, तो जस्ट अ मिनट, एक मिनट। announcements, PDF, 7th, we have done प्रेशर कर लिया। Okay. लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हो गया। डायटोमिक गैस, पॉलीएटॉमिक गैस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, मीन फ्री पाथ हो गया। खत्म ही हो गया यार। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 1/3 डन है।
हाँ जी। JEE Mains 2022. सर इसका ए एंड बी आर ओनली। In square different way of storing energy. How so? If there are 2 degrees of freedom, then 2 square, 4 ways of storing energy है. ये कब हुआ? If there are n degrees of freedom, then there are n square. ये prove करना जरा. So let's say the degree of freedom is 5. तो 25 different ways हैं. ये कब पढ़ाया नहीं मैंने भाई? नहीं। ये तो गलत है outright. अब monatomic gas is rotational. बिल्कुल भी नहीं. Monatomic has only translational. सिक्स ये एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम CH4 की। ये एक पॉलीएटॉमिक गैस है, मतलब ऐसे। नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस है. लेकिन इससे ये तो दोनों गलत हैं. देखो ये ए और सी सर तो गलत फिर है, तो बी और सी ये बचा गलत है, फिर। ये गलत है. बी एंड सी। नहीं, और बी एंड डी। अच्छा, ठीक कौन से वाला है? बी सही है. और डी भी बी सी सही होगा है. फिर। ये गलत हो गया क्योंकि ये नहीं हो सकता, वही बी एंड डी है, पॉसिबल क्योंकि दिस कॉम्बिनेशन। इज अ पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर गैस, राइट, जिसकी 6 हम ले सकते हैं. नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस. इन्होंने बी एन सी दिए, बी सॉरी बी एन डी. ना बी एंड डी तो। इन्होंने आंसर ही क्या दिए? स्टेटमेंट, अच्छा नहीं, स्टेटमेंट बी इज करेक्ट. हाँ, बी एन डी. ये सी एंड डी तो ए एनी एंड डी। पॉलीएटॉमिक ए एंड गैस सी तो विल गलत ही हैव है। 6 डिग्री. हाँ ठीक है. पॉलीएटॉमिक गैसेस हैव 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. बी एन डी. तो कोई यस. भी अगर इथेन में होगी उसकी भी 6 डिग्रीज होगी। हाँ, रूम टेम्परेचर. नीचे एक और क्वेश्चन है.
एक क्या आ रहा है भाई तुम्हारा आंसर? सीवी निकाल लो ना। एडियाबेटिक कांस्टेंट ही तो पूछ रहा है। सीपी बाय सीवी। वैसे देखा जाए तो वैसे बी आ रहा है। पी आर एल है। और जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। बी। सॉरी। ए। क्योंकि ऊपर सीवी लिखना है यार, सीवी बाय सीपी निकालने को बोला है। अच्छा सीपी बाय सीपी सीवी, बाय, हाँ। अच्छा ध्यान से पढ़ो। उल्टा निकल गया था। आ गया। सिंपल राइट, कोई खास। दिस क्योंकि इज सीवी इंटरेस्टिंग। एन आर बाय टू है, हाँ। और सीपी जो है वो एन प्लस टू इंटू आर बाय टू। आ लो जी। अब बारिश आई थी रात को, ओए होए। हमारे यहाँ पे काफी तेज बारिश आई थी। बहुत। वैसे सर, जो अगर बारिश ना आए ना सर्दियों में, तो वो जो सूखी ठंडी होती है ना, हम कहते हैं उसको, हम्म। वो नुकसान दे देती है। हम्म। अब अच्छा हो गया ना। हाँ, ये जरूरी होती है। सर ऑप्शन बी। कैसे निकाला?
अच्छा, इट्स अ मोनोटॉमिक गैस, 7 moles, डेल्टा टी दिया हुआ है, तो यू हैव यूज, अच्छा वही यूज कर लिया है। सी वी इज इक्वल टू 3/2, हाँ ठीक है, यस लिंक हो गया ना हाँ, दोनों का। इफ यू जस्ट डू थिंग्स इन डिटेल and you have memorized all the formulas and you have a clarity on which one to use when, धाड़ धाड़ आंसर है। बताओ, ये क्वेश्चन दिया है, कस के इनको। कुछ नहीं बना तो फॉर्मूला ही फिट कर लो। बी आंसर सिमिलर सभी के ही थे ऊपर। सही है, और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये बड़ा फेवरेट होता है। एक्सपोजर टू दिस विल बी गुड टू नो। एवरेज एडियाबैटिक कांस्टेंट निकालने को बोल रहा है बेसिकली, राइट, एक तरह से। वेटेड एवरेज टाइप का क्वेश्चन है ना, मिक्सचर का निकालना है। अब दो गैसेस हैं, so you know the individually it is very simple, right? This is monoatomic, this is diatomic, but you have to find Cp and Cv of the mixture, gamma of the mixture, gamma mixture। तो मतलब गामा मिक्सचर के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए कि फिजिकली समझ में आ जाए कि दोनों 16 गैसेस ग्राम का ऑफ जो हीलियम मिक्सचर एंड होता है, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मतलब मिक्सचर में क्या अ, मतलब ये है ना कि जब गैस एक मिक्सचर बन जाती है, मिक्सचर राइट, तो उसकी मान लो सीवी कॉमन हो गई, राइट, तो वट हाँ, एवर इज इंडिविजुअल, राइट, एन सी वी डी टी एंड एन सी वी टू डी टी,
एक्चुअली बिकम्स इक्वल टू NCV मिक्सचर इनटू DT। और ये ऑब्वियसली N1 + N2 हो जाता है, राइट? तो कॉमन हो गया ये, राइट? मतलब है स्पेसिफिक हीट तो वही रहती है ना, इंटरनल एनर्जी, द हीट टेकन बाय द गैस। तो अभी मिक्सचर अगर कॉमन CV का होता तो इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स तो आपको पता ही है, N1 + N2 है। और चेंज इन टेम्परेचर है तो एक गैस, दिस इज द टोटल हीट which is coming from individual gases, one gas and the second gas। ओके, सो इसका N1 N2 है, और यहाँ पे आप लिख लो N1 + N2। सो योर N1 CV1 dt plus N2 CV2 dt actually becomes N1 + N2 CV mixture into dt। भाई इसने जितनी हीट ली और इसने जितनी हीट ली DT में, वो मिक्सचर को मिल गई ना वैसे तो, और मिक्सचर एक ही पे है। तो अगर हम DT सब में से हटा दें तो N1 C1 VV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 + N2 विल गिव अस CV मिक्सचर कॉमन। भाई इसके अंदर 50 जूल थी, इसके अंदर 70 जूल थी, आएगी तो इसके अंदर 120 ना। लेकिन वो एक CV से जुड़ी होगी, तो एक CV लिख लिया, लेकिन मोल्स तो सेम ही है, N1 + N2। तो कॉमन ही आ गई, N1 C1 N2 C2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस। व्हाट डू यू थिंक? मिक्सचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो अगर, तो कॉमन CV, heat remains heat, right? The sum cannot change, this 50 plus 70 cannot change, it has to become 120, but now it is in terms of some common CV mixture. Mixture has these many moles but a common CV। समझ आया? इसका CV हमें मालूम है क्योंकि ये इंडिविजुअल गैस मोनोएटॉमिक है, इसका 3/2 R होगा, इस भाई साहब का 5/2 R होगा, राइट? ये 16 ग्राम है, तो दिस इज 4 मोल्स। N भी मालूम है, ये 16 ग्राम्स मतलब है, सो पॉइंट दिस फाइव इज 0.5 मोल्स। ये वाला फॉर्मूला लगा लिया, N1 CV1 प्लस एन टू सी वी अच्छा टू ठीक है, समझ गया। है ना? क्योंकि वो हाँ हाँ, टोटल तो कहीं नहीं जाएगा ना, तो कहीं नहीं, है ना? मिक्सचर। वो एक कॉमन में कन्वर्ट हो गया, तो चलो जी CV मिक्सचर कर लिया। लेकिन ये जो N1 + N2 कॉमन इनटू DT, ये भी तो 120 रहेगा अगर लेफ्ट साइड पे एनर्जी इंडिविजुअली 70 और 50 है। अब कॉमन 120 है, बट कॉमन लिखने का तरीका हो गया N + N2 CV मिक्सचर इनटू DT। क्लियर? यस सर। तो चैप्टर खत्म हो गया जी आपका, मुबारक हो। थैंक गॉड। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस थोड़ी कम करी हुई है हमने, बट इंडिविजुअली टॉपिक बाय टॉपिक कर ली है, पर थोड़ी सी कम है। देखेंगे अगर हमारे पास टाइम होगा तो वी विल कम बैक टू दिस चैप्टर एंड अगेन डू इट। थोड़ी सी और क्वेश्चन करने चाहिए हमें, अदरवाइज यू डू इट फ्रॉम SLA, यू विल गेट अ गुड ग्रिप। हाँ नहीं, मैं ऐसा लोड़ा से कर लूंगा वैसे। अच्छा, मतलब एक फॉर्मूले की कंसोलिडेशन दिमाग में हो जाएगी, ये मीन फ्री पाथ भी याद है मुझे, सब एकदम माइंड में क्लैरिटी बिल्कुल कि किस कौन सा कब लगना है, और उसका मतलब वेरिएबल कौन कौन से इन्वॉल्व है उसके अंदर। ठीक है जी, सी यू देन।